Good morning. So what we will do today is we will try understanding how to prepare some very continuous questions. लगातार आप लोग पूछते हो मुझसे कि कैसे तैयारी करें and क्या करें, क्या books पढ़ें. So I thought that we can make a video, that how to prepare for economics optional and which books to refer and what will be my method in preparing you for economics optional. So I thought एक video बना लेते हैं और इस वीडियो के थ्रू सब लोग समझ लेंगे. Via this video, all of us can understand that what will be our methodology, what should be the methodology for economics optional, what is the scope of the subject. जो डराते हैं लोग आपको कि economics बड़ा खतरनाक subject है, नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं लेना चाहिए optional, वो डर कितना नाजायज़ है. How wrong is that fear that economics is a difficult subject? I thought let's have a video, small session, so that the students can have clarity on these issues. And hopefully then you will have some of your answers satisfied. In case there are more questions, you can always connect to me. आप ज़रूर मुझे और मेल कर सकते हो, जब आंसर्स पूछ सकते हो अगर कोई और इशू रह जाते हैं आपके. लेकिन कोशिश कर रहा हूँ एक कि इस वीडियो के थ्रू सारे के सारे जो normal questions होते हैं, the questions that come to your mind very often, those normal questions we can answer in one go, so that there can be one-stop method. Of course, internet पे बहुत सारे videos available हैं about different people suggesting you how to prepare. तो उसमें एक और suggestion है मेरा. I have a point to tell you that you can listen to 5 people, but end of the day have your own methodology of preparation. So this is just a small effort. एक कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आपको contribution थोड़ा मिल सके about how to go ahead and prepare well for your economics optional. So, when we look at this, when we look at the whole idea of economics optional, so we'll first talk about, there are few things that I keep getting asked. बहुत सारी बातें बच्चे मुझे पूछते रहते हैं, जो students आपके doubts रहते हैं. तो what I thought that that the best way to answer it is to take the topic one by one and answer it. So of course, to begin with, for very beginners, when you look at economics optional, you have paper 1, which is broadly divided into microeconomics, macroeconomics, international economics, development economics, money and banking, and public finance. तो एक एक करके बात करेंगे. We will talk about them one by one, that how do we overcome the issues we face in these subjects, और क्या UPSC ने किया है पिछले 7-8 सालों में, and what we can expect to do them to do in future, so that we can have a good preparation on our optional. And then you have your paper 2. तो जो paper 2 है, in this broadly it is about Indian economy before 1947, Indian economy between 1947 and 1991, and Indian economy after 1991. These are the 3 broad places from where they ask you questions in paper 2. तो चलो एक एक करके करते हैं. Let's take it one by one. Let's begin with paper 1, a quick analysis on how we can approach paper 1. I'll try covering for you what kind of books you can refer and how to approach those books. And we will then try understanding that what method I approach in the class. Not to tell you that यही method तुम्हें करना है, but there is a methodology I have followed in my classrooms which I have seen working good for students. So that methodology we will first understand. So first thing will be about knowing the course, knowing the papers. Second thing, then thereafter we will answer about whether what kind of approach you need for economics optional, कैसे लोगों को लेना चाहिए ये subject, क्या requirement है इस subject की. फिर बात करेंगे difficulty levels कैसी होती हैं paper की, what kind of difficulty level you face in the examination hall, और बातें करेंगे क्या extra कर सकते हो इस paper में अच्छा करने के लिए. What else can you do apart from what normal students do to do better in this economics optional paper. We'll try talking in some detail on all this. Hopefully again you should have most of your queries resolved. तो देखते हैं चलो. Let's understand first thing. Both papers have the same design, that you will have a set of
8 questions. The first question will have 5 parts and it will all be compulsory. Then there will be second, third and fourth question. And then fifth question will be compulsory, all 5 parts. 6th, 7th, 8th will be among options. So if we look at it, say paper 1, design of the paper. Design of the paper. जो हमने देखा पिछले कुछ सालों से यूपीएससी को, what we have seen UPSC doing in the past few years is that again you will have question number 1, parts A, B, C, D, E, and this all will be 10 marks each, compulsory. You cannot leave any of them. So this will be 5 questions, compulsory. You cannot leave any of these questions. And then you will have questions 2, 3 and 4. Normally there are 3 parts in each. Similarly, you have a question 5. Again, you will have A, B, C, D and E. Again 10 into 5 and all of this will be compulsory. ये कंपलसरी पार्ट है आपके, और ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये 50 मार्क्स ईच होते हैं, 50 मार्क्स ईच फॉर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, 50 मार्क्स ईच. बट ये तुम्हें सारे अटेम्प्ट नहीं करने. You don't have to attempt all of these second, third and fourth. Similarly, you can have 6, 7 and 8, and normally again there is A, B, C for 6, 7 and 8, and again there is 50 marks that they attach to each of these. तो जो UPSC demand करता है आपसे, what UPSC says is that you have to attempt these 2 compulsorily, and among these 6 that you see, among these 6 that you have, the course material requires us to cover any three with at least 1 from each section. At least 1 from each section. ये उनका तरीका होता है आपको पूछने का, that 2, 3, 4, 6, 7, 8. Out of these 6, you have to attempt any 3. But 1 should be there from each section. So this side that I have written for you, this is your section A, and this side 5, 6, 7, 8 is your section B. So section A is 1, 2, 3, 4. Section B is 5, 6, 7, 8. 1 and 5 compulsory है, ये तुम्हें लिखना ही है आंसर 5 के 5 क्वेश्चंस के. 2, 3, 4, 6, 7, 8 इनमें से कोई 3 आंसर करने हैं. Any 3 have to be answered with at least 1 from each section. तो अगर आप 2 चूज कर लिए यहाँ से तो तीनों ये नहीं लिख सकते. You can't write all the 3 here. You can choose at most 2 and then 1 from here. Or if you have chosen 2 here, then you will have to choose 1 from here. इस तरह से आपको अपना पेपर डिजाइन करना है. तो इफेक्टिवली पेपर कितने का हो गया? 50 मार्क्स क्वेश्चन 1, 50 marks question 5, and then 150 marks for these 3 questions. That is how it is designed. So 50 marks question 1, 50 marks question 5, ये compulsory है, तो 100 marks के question compulsory है, and then from question number 2 to question number 8, you can choose any 3, and that is your rest 150 marks of the paper. Let's move to the way they have asked it. अभी तक उन्होंने क्या किया है, that the first part, section A, is normally definitely micro, macro. ये section A में हर साल देते हैं वो आपको. Every year in section A they ask you micro and macro. Section B में international economics, development theory. लेकिन ये याद रखिए that ऐसा कुछ उन्होंने compulsorily कहा नहीं है. They have not said that they cannot ask micro this side or they cannot ask international eco this side. In few of the years they have done it. They have asked international eco in section A and they have asked macro questions in section B. So it's not that they have given a foolproof thing कि नहीं भाई हम तो नहीं पूछेंगे आपसे कुछ भी इसके अलावा नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो. Plus when it comes to money banking and public finance, so money and banking and public finance questions. Now, initially there was a system, 2017 तक, till 2017 I see a trend
that they kept asking this, mostly money banking in section A and public finance in section B. I saw this happening. But in the last 2-3 years, they have started changing it. ये बदल गया है. So now you can see questions from these two in section A or section B, depending on where UPSC wants to fit it in. तो दोनों ही सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं. So micro macro normally in section A, international economics development theory mostly in section B, but money banking and public finance, it can be in section A or it can be in section B. It can be anywhere that they can ask you these questions. So आपको prepared रखना है खुद को कि mentally, that is, कि आप ये सोच के मत जाओ that my question has to be from this particular place. वो कहीं भी हो सकता है. तो money banking, public finance तो बिल्कुल ही कहीं भी हो सकता है. Money banking and public finance, you may see it in section A, you may see it in section B. But micro macro, normally we have seen them asking it in section A, and money bank, international economics and development theory mainly in section B. Then what I have observed is that if we take since 2013, if we do an analysis of the paper, then from micro, they have asked us approximately 36 questions. From macro, they have asked us approximately 38 questions. From money banking and public finance, because remember, the syllabus takes the two together. The syllabus takes this as one unit, money banking and public finance. This is one unit in the syllabus. So from money banking and public finance, there have been approximately 30 questions. Then from international economics, they have asked us approximately 38 questions. And from development theory, यहाँ देखो क्या है, कुछ चीज़ें fungible भी हैं. There are few things fungible here, so please understand that too. A question on role of FDI in development can be treated as development question, can be treated as international economics question. I have treated these questions as development questions, तो इसीलिए number थोड़ा बढ़ जाता है. From development economics, approximately what I have seen them is around 40 odd questions. Apart from this, there are 10 to 15 questions which can be put in miscellaneous category. It's a mix of various topics. But broadly, this is the picture. और मैं तुम्हें एक कारण से दिखा रहा हूँ. There is a reason that I'm putting it for you. ये कारण क्या है? The reason I'm putting it for you is that in your subconscious, normally what happens is, since we see a lot of micro-macro questions, there is an unnecessary feeling that there are too many questions from micro and macro. I hope this analysis can tell you that it's not that there are too many questions from micro and macro. There are questions from all over the place. It's just that micro-macro questions remain registered more. नहीं तो वो अवचेतन मन में रहता है कि micro-macro के सवाल ज़्यादा हैं, इनके प्रश्न पूछे गए और जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है या जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसके प्रश्नों की संख्या कम हो गई. ये नहीं होता. जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं, the questions that they are asking you, there is no skewness in their distribution of questions. If you see, these 10-15 can fit in anywhere. So if you see, more or less similar number of questions have been asked from each topic. So please do not skew your preparation like that. ये मत करो कि कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ गए माइक्रो मैक्रो और नहीं पढ़े डेवलपमेंट, तो वहाँ फिर झूला झूलेंगे. So this has to be clarified once and for all. So I hope ये तुम्हें मदद करेगी ये बात, that prepare yourself in a balanced manner. Yes, within the subject, within the topic, you can always choose what to do better and what not to do and so on. तो एक ये बात मैं चाहता था तुम्हें बताना. I wanted the classroom to understand, or viewers to understand, that okay, there is no such distinction that only micro macro is dominant or mathematical questions from micro macro are dominant. It's one of the thing routine जो पूछते रहते हैं हमें. Now let's move on a discussion where we talk about micro preparation, and I'll quickly make it 5 minutes each so that you get an overview. So micro, the good books that you can refer, one book which has all the models is H.L. Ahuja's book. The book you can refer, H.L. Ahuja's book. It is called Advanced Microeconomics. But इस book के साथ एक problem है, ये ज़रूरत से ज़्यादा detailed है. इतना detail भी नहीं चाहिए हमें.
There is a problem that the book has, that it has a lot of details in it, and sometimes those details are an issue. इतना ज़्यादा repetition है, graphs कहीं-कहीं गलत हैं, mathematical treatment थोड़ा गलत है, तो थोड़ा conscious रहना. You should be conscious that graphs, mathematical treatment should be cross-checked, so that you don't do the error that the book has done at times. But otherwise, overall, it's a decent book to read for UPSC. And most importantly, all topics get covered with this book. If you're someone who doesn't like Indian authors or doing Indian authors much, then in that case, Kutsianis is the book that comes closest. Kutsianis. This is Modern Microeconomic Theory. Modern Microeconomic Theory. Second edition or third edition, any would do. Second or third edition. With HL Ahuja, it can be anything like 21st, 22nd, any edition from here onwards. They are fine. You can take any of these. तो ये आपकी बेसिक किताबें हो सकती हैं. क्लासरूम में मैं क्या करता हूँ? What I do in the classroom is that I take the topic, I make my notes, and I teach it to you so that your need of these books goes away. So if you are in the classroom, अगर तुम मेरे साथ क्लासरूम में हो, then in that case you have to do the notes that I give you, and those notes are made from sources which are HL Ahuja, Kutsianis, Varian, Snyder, Rubinfield, independent papers written by different authors. ये मेरे sources हैं जो मैं रेफर करता हूँ किताब के लिए. तो ये मेरे sources हैं कि जब मैं आपको notes बना कर देता हूँ, what I do is I look into past year questions. ये सीखना जरूर, learn this. Look into past year questions. Try finding a trend in them, that what these questions were asking every year. If possible, if there is some trend in these questions, then apart from solving the past year questions, predicting from the past year questions what they can ask in the future years. वो मेरा काम है, यही करता रहा हूँ. तो यही कोशिश रखता हूँ कि पास्ट ईयर में जो पूछा उसको एक ट्रेंड बनाता हूँ कि अच्छा फिर फ्यूचर में क्या बातें ज़्यादा हो सकती हैं, किन टॉपिक्स को पूछ रहे हैं ज़्यादा और किन टॉपिक्स को सडनली ड्रॉप कर दिया कि 1-2 साल तो पूछा. जैसे इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के क्वेश्चन शुरुआत में आसान पूछे, धीरे धीरे एप्लीकेशन पे ले आए. तो ये समझना ज़रूरी है. That okay, what kind of questions did they ask in the beginning? So in the beginning, income effect, substitution effect, they would ask you simple questions like compensated demand curve. And now these days they have shifted to labor supply curve. It's possible they can shift to saving investment, they can shift to giffen goods and so on. तो ऐसी बातें पूछी जा सकती है. We have to be careful on that. So that's what I try doing, that past year questions and notes from various sources, and then try teaching. ये एक overview दे रहा हूँ कि अगर तुम खुद से prepare करने बैठे हो तो फिर क्या करो कि ये किताबें तो हैं बट ये सब कवर नहीं कर पाती. तो उसके लिए हाँ, अगर मेरे साथ कर रहे हो तो फिर वो नोट्स में इस तरह से बना कर देता हूँ जिसमें इनपुट्स डालता हूँ हर जगह से, और पास्ट ईयर पेपर्स भी कवर करने की कोशिश होती है. दैट अगर खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ज़रूर करो. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, देन ऑल्सो यू मस्ट ट्राई दैट यू मस्ट आंसर ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम विच एवर सोर्स you are referring, so that at the end of your preparation, at least that part gets covered entirely. Because UPSC has shown repetition of past year questions, 20-25%. What they do is they change the language. भाषा में बदलाव कर दिया और उसके साथ वही प्रश्न वापस आपके क्वेश्चन पेपर में डाल दिया. तो जब तुम बैठोगे वहां उत्तर देने तो देखोगे कि बहुत सारे प्रश्न लग रहे हैं सुने हुए, तो वो इसीलिए लगते हैं. Many questions you will feel you have heard this, seen this question in the past, or you may have heard about them. So that happens if you have revised your past years well. So even if you are appearing mains this year in 2020 and you are someone who is listening to me in this video, must make sure that you have gone through the past year question papers good enough, so that you have a good inkling of it. तो ये नहीं कि exactly वही question आएगा. It is very rare that exactly the same question gets. ये भी हुआ है वैसे, that exactly same question has come, but that's very rare. But similar questions can appear. So for that you got to prepare yourself. तो एक तो ये करोगे माइक्रो के लिए. In micro, further if you ask me, there are some typical topics you should keep in mind. Some typical topics that you should keep in mind. So micro, typical topics that should be kept in mind. First is comparison
and comparison means both similarity and differences. दोनों में समानता क्या है, दोनों में भिन्नता क्या है, ये दोनों ही हमें पता होने चाहिए. तो कंपैरिजन, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ऑफ मार्शल एंड वॉलरस, that we should do well. Partial equilibrium analysis, this I suggest you can cover. So this part is good to be covered. Similarly, ordinal utility versus cardinal utility. Ordinal utility, cardinal utility. Hicksian approach and Marshallian approach. This you should know. In ordinal utility, you must know income effect and substitution effect questions plus their applications. So income effect, substitution effect आना तो चाहिए, plus their application like labor supply curve, Giffen goods discussion, demand curve for Giffen goods, savings discussion, saving interest rate relation. ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए जब ये टॉपिक पढ़ रहे हो. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी का कंपैरिजन पता होना चाहिए. Similarly, you should also know and ऑर्डिनल यूटिलिटी में इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इक्विलिब्रियम, ये चीज़ें रिवाइज्ड रहनी चाहिए ठीक से. सिमिलरली यू शुड नो योर प्रोडक्शन फंक्शन. इसमें मैंने देखा है दैट होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन पे थोड़ा ध्यान देते हैं यूपीएससी वाले. दैट एट टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड अस क्वेश्चंस ऑन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. कॉप डगलस को लेकर आंसर क्वेश्चन पूछ लिया, होमोजीनियस को लेकर पूछ लिया. थोड़ा उसको लेकर कॉन्शियस रहना दैट दीज पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शंस आर कवर्ड. Then in production function, apart from that, you should know your isoquant and isocost. That method of equilibrium, that isoquant, isocost method of equilibrium. और इनको जानने के साथ expansion path. That knowing your isoquant, isocost and then knowing your expansion path. तो ये थोड़ा हमें आइडिया रहना चाहिए कि क्या पूछा हमसे, इन पे पास्ट में क्या पूछा हुआ है. We should know these topics well. Similarly, apart from these, in micro, markets is very important. हर साल एक क्वेश्चन होता ही है मार्केट्स से. There has to be a question from markets every year. And in markets, if it comes to perfect competition, there are some typical questions they have here. Perfect competition में आप देखना short run and long run supply curve, industry supply curve. ये क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं. दैट शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व. देन कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, दैट वी शुड नो. कंसेप्ट ऑफ शटडाउन पॉइंट वी शुड नो. ये कंसेप्ट सीखने हैं हमारे ज़रूरी हैं परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से. इन मोनोपोली, जब मोनोपोली पढ़ते हो तो अब ये मोनोपोली में देखना शुरू में नहीं पूछते थे. अब जब उन्होंने रियलाइज किया कि स्टूडेंट मोनोपोली नहीं पढ़ रहा है, इन द बिगिनिंग दे वुड नॉट आस्क यू मोनोपोली. टिल 2016 देयर वाज हार्डली एनी क्वेश्चन ऑन मोनोपोली. सडनली दे रियलाइज स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग मोनोपोली, तो धप्पा कर दिया 2017-18 से दैट एक क्वेश्चन मोनोपोली का डाल देंगे. तो मोनोपोली अगर पढ़ते हो, देन सोर्सेज ऑफ मोनोपोली ये हमें आना चाहिए. मेजर्स ऑफ मोनोपोली, लर्नर का इंडेक्स, लिंडाल का इंडेक्स, ये हमें आना चाहिए. एंड डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली, ये हमें आना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन के एप्लीकेशन भी जरूर पढ़ोगे. यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, एप्लीकेशन इन पीक लोड प्राइसिंग, एप्लीकेशन इन टू टियर टैरिफ. these applications we should know. In monopolistic competition, what I have seen them asking is typically 2-3 things, not beyond that. So in monopolistic competition, they ask us on, when we see monopolistic competition, they ask us on Joan Robinson, her idea of monopolistic competition, Chamberlain's idea of monopolistic competition. Similarly, they ask us about excess capacity.
in monopolistic competition and equilibrium in monopolistic competition. Equilibrium, welfare loss, you know. So John Robinson Chamberlain's comparison भी आ सकता है कि दोनों को compare करो, differences आ सकते हैं या individually आ सकता है. So it can be asked comparatively, asked as a difference and asked individually. Their concept of excess capacity and equilibrium, welfare loss, how monopolistic competition is not like, doesn't give you profit like monopoly. Such questions they can ask us. So this is on monopolistic competition. And then fourth market form, oligopoly, they mostly ask us King's demand curve, Cournot, Bertrand, and Stackelberg. इन्हीं पे उन्होंने खुद को कंसेंट्रेटेड रखा है. कूर्नो, बर्ट्रा, स्टैकलबर्ग, किंग डिमांड, ये मार्केट्स में पूछते हैं और मार्केट्स जरूर अच्छे से प्रिपेयर करोगे बिकॉज मार्केट्स के क्वेश्चन होते ही हैं. एवरी ईयर यू विल सी दैट देयर हैज टू बी अ क्वेश्चन फ्रॉम मार्केट्स. तो वो प्रिपेयर्ड रखो खुद को कि वो तगड़ा रहे हमारे हाथ में. कुछ बातें बिल्कुल कंट्रोल में होनी चाहिए. सी आई टेल यू व्हाट, व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल, out of 250 marks that you have to attempt, if you know your 200 marks good, then you are doing good. एक तो ये खुद को फीड करो. ये सबके लिए कह रहा हूं जो लोग इस बार मेंस दे रहे हो वो भी दिमाग में रखना कि 250 नंबर में अगर 200 नंबर बढ़िया से आते हैं तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां तुम 135 140 तो उन 200 में ला सकते हो अगर दिमाग कंट्रोल में है और अच्छे से आंसर लिख रहे हो. तो बाकी के 50 में अगर तुम 15 भी ले आते हो तो तुम बड़े आराम से 60% हिट कर रहे हो, विच इज वेरी ह्यूज इफ यू लुक एट द ऑप्शनल मार्किंग. तो वो 150 नंबर अगर 250 में आ गए तो बहुत ही अच्छे नंबर आ गए 140 150 के बीच में. तो वो ही लेके चलो that when your aim is that I have to score well in optional, then I must know my 210 marks well, and then rest 30-40 marks I should be able to answer nicely. That will take me to somewhere around 140-150 easily or properly, but good answering is needed. वो आऊँगा उस पर एक और वीडियो करेंगे, अभी तो syllabus और treatment बता रहा हूँ. And then in micro, apart from markets, you have to do distribution theory. अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो जनरल इक्विलिब्रियम जरूर अच्छे से कर लोगे, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं. जनरल इक्विलिब्रियम ये परेटोज वेलफेयर मेथड को भी कवर कर लेता है. इफ यू हैव कवर्ड जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम मीन्स ऑल द थ्री इक्वेशंस MRTS LK फॉर x equals MRTS LK फॉर y और MRS AXY equals MRS BXY and so on, and MRS A equals MRS B equals MRT XY and so on, तो ये क्वेश्चंस हमें कवर कर लेने हैं. साथ में परेटो मेथड ऑफ वेलफेयर कवर हो जाता है. इसके अलावा यू शुड कवर योर कैल्डोर, हिक्स एंड स्किटोवस्की. अब मैं जानबूझ के माइक्रो में इतने डिटेल में बता रहा हूं तुम्हें. आई एम गोइंग इनटू डिटेल्स ऑन माइक्रो टू गिव यू अ हिंट कि कैसे हमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं. हर टॉपिक पे नहीं बता पाऊंगा ऐसे, लेकिन माइक्रो का तो बता सकता हूं. तो एक टॉपिक से आइडिया लग जाएगा तुम्हें दैट हाउ वी कैन गो इनटू डिटेल्स. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन गो इनटू डिटेल्स ऑफ ईच टॉपिक एंड प्रिपेयर योर नोट्स प्रॉपरली सो दैट एनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर आई कैन आंसर इट. एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज एरो एंड सेन theory. So arrow's impossibility, and Saints welfare. These are the three parts again that you should majorly go for, with respect to distribution and welfare. In distribution, the other aspect that you should cover is when it comes to Ricardo. This has been asked very often. Caldor and Kalecki, their theories of distribution. Ricardo, Caldor and Kalecki. Now, good thing about economics is, or first paper is, these are all fixed models. Once you have known the models, you know the answers. एक बार तुमने मॉडल सीख लिया, तुम्हें हमेशा के लिए आ गया वो, तो तुम्हें दोबारा इनको बार बार नहीं पढ़ना. ये बदलेंगे नहीं, ये डायनामिज्म नहीं है इनमें. ये वही मॉडल है जो 50 साल पहले 40 साल पहले लोगों ने दे दिया. और यूपीएससी भी सवाल सीधा पूछता है इनसे. यूपीएससी doesn't ask you these things in a tricky manner. So in that case, the real idea is that we should know the model well and we should be able to put it forth and answer our questions better. So वो मॉडल्स पढ़ने का यही फायदा है. तो माइक्रो की तैयारी ऐसे होनी चाहिए. That when you are preparing for micro, you should do your consumer behavior, your
partial equilibrium analysis of Walras and Marshall, your questions on income effect, substitution effect, cardinal utility, ordinal utility. You should do your questions on the markets and production cost, and then welfare and distribution. So these questions are, और ये नहीं कह रहा हूँ इतना ही माइक्रो है, ये कह रहा हूँ ब्रॉडली ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा पूछे हुए टॉपिक्स हैं, तो इनको ज़रूर कवर कर लें हम. So micro will be like that. Similarly then, when it comes to further, in macro, life becomes relatively easy. Macro, you have to do classical model, and a good book can be Richard Freund, but Freund may not cover all the topics. This is chapter 2 to 10 of Freund, otherwise that is good enough. Apart from Freund, you may have to refer sources like say Snowden for certain parts, certain topics. And sometimes Delhi University 4th semester readings are useful. But again, if you are doing it, if I'm teaching you, I combine these, apart from that, Indian authors like H.L. Ahuja or Jingan. I also combine some independent papers that are like say Keynesian papers or papers written by neo-Keynesians, new classicals and so on. And that is how we do it. जब मैक्रो पढ़ते हो तो 4-5 थ्योरीज पढ़नी है हमें. क्लासिकल, केन्स, नियो केन्स. ये नियो केन्स था ISLM. दिस वाज नियो केन्स. फिर नियो क्लासिकल. ये नियो क्लासिकल जो है वो है स्टिकी AS, फूलिंग मॉडल. ये सब नियो क्लासिकल है. देन न्यू क्लासिकल. न्यू क्लासिकल जो है वो है रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी. सो रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो आप पढ़ते हो वो न्यू क्लासिकल थ्योरी कहलाती है. एंड देन न्यू केन्स. सो न्यू केन्स इज कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट एंड माइक्रो इम्प्लीकेशन इन मैक्रो. इन सब के अलावा एक और थ्योरी आप पढ़ते हो जो कि अलग से आता है, वो है मॉनिटरिज्म. ये मैक्रो का सिलेबस हो गया. आपको कवर कैसे करना है? when you have to cover this macro syllabus, the best way to go about it is when you go for macro, macro coverage. यहां क्या करो, जैसे एक क्लासिकल मॉडल ले लिए, तो क्लासिकल मॉडल में देख लेना है AS कर्व, AD कर्व, determination of income, price and interest rate, impact of fiscal and monetary policy. Impact of other variable changes. So other variables like technology change. ऐसे दिमाग चलाओ, think like this. तो ठीक है, हमें क्या करना है, एक देख लेना है AS कर्व कैसे ड्रॉ हुआ क्लासिकल का, AD अगर है तो कैसा है, जबकि क्लासिकल वाले में AD नहीं होता था. So what we used to do is we used to extrapolate our AD from the Fisher's equation and then draw that AD. So that is classical AD, then determining income, price and interest rate, then impact of fiscal and monetary policy, and then impact of other variables like technology. So approach classical like that. Similarly approach Keynesian like that. Every model you have to approach. How is income, price and interest rate determined? What is the impact of fiscal and monetary policy? And what is the impact of other variables in this whole model? Every model has to be approached in that manner. Then every model will have its own typical features, जैसे Keynes के केस में paradox of thrift, ये एक typical feature है, तो जरूर prepared होने चाहिए इसके notes हमारे पास. Liquidity trap, ये typical feature है.
तो हमें पता होना चाहिए कि ठीक है भाई कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये टिपिकल फीचर्स जरूर प्रिपेयर कर लो अलग से। सिमिलरली फॉर नियो केंशियन ISLM मॉडल देयर आर टिपिकल फीचर्स लाइक क्राउडिंग आउट। सो हमें पता होना चाहिए क्राउडिंग आउट क्या है। न्यूमेरिकल्स ऑन ISLM हमें पता होना चाहिए हाँ भाई न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, यू नो। सो टिपिकल फीचर्स वी मस्ट नोट डाउन फॉर एवरी मॉडल। Similarly for neoclassical, Friedman's Fooling model, impact of fiscal monetary policy, and combining both ISLM and ADAS. Then similarly supply side inflation. ये तो सब neoclassical model ही बोल पाता था, तो supply side inflation, stagflation, इनको prepare करके रख लिया। So you know that is the way that every model I must have my notes made with preparation of special things that happen in that model, which they have asked frequently in the exam. So that should be your method of preparing your macroeconomics. But good thing about macro is कि जो उन्होंने पूछा है वो एक तरह से ही पूछते रहे हैं, हाँ क्वेश्चन में हेरफेर करते हैं। द लैंग्वेज इज द की। तो अगर तुम एक बार लैंग्वेज कैच कर लोगे, दैट व्हाट लैंग्वेज इज दे आर आस्किंग मी इन, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस much better. So in macro what you should do, the focus while studying is that understanding different languages, what is the meaning of different terminologies that they are using, you know, जो भी अलग अलग शब्दावली प्रयोग होती है उनका एक हमारे दिमाग में पूरा संपूर्ण पिक्चर प्रेजेंट होना चाहिए। You know, there should be clarity कि क्या वो जो पूछ रहे हैं उसकी क्लैरिटी है या नहीं हमारे पास, वो क्लियर होना चाहिए। Once we are clear on their language, macro becomes easier to answer, because what I have seen is that they have asked you complete models. एक मॉडल पूछ लेते हैं, केन्स बता दो, क्लासिकल बता दो, उसका ये पार्ट बता दो, क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। And if you have presented the model, the marking is also very good. Then when it comes, and as I told you, Freud is a good book to read on macro. You know, Freud is a good book to read. Snowden is a good book to read. You can pick Freud or Snowden, any of these. And if you're doing your classes with me, then that's my job. ये सारे बुक्स की चर्चा इसलिए है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे, अगर पढ़ रहे हो कहीं पे कोचिंग मुझसे पढ़ रहे हो, कहीं कर रहे हो, तो ये बुक्स कवर करते हैं ट्यूटर्स. That has to be covered. Ideally, when I teach you in the classroom, I make sure that my notes cover all these books, so that in case the question is from these books, you are able to answer them better. Then, when it comes to international economics, और ध्यान रखना, मैंने इसीलिए माइक्रो काफ़ी डिटेल में बताया था. आई वेंट इनटू माइक्रो इन अ लॉट ऑफ डिटेल कि तुम समझ सको कि अच्छा क्वेश्चंस कैसे पिक करने हैं और अपने टॉपिक्स कैसे पिक करने हैं, हाउ टू पिक द टॉपिक्स, हाउ टू पिक द क्वेश्चंस. इन दीज टॉपिक्स नाउ आई एम टेलिंग यू द ब्रॉड आइडिया ऑफ हाउ यू शुड प्रिपेयर. Salvatore is the best book to use, and this can be the only book that you can refer to, but there are few parts where you will need Krugman's book, Krugman and Obstfeld. So books, if you ask me, these are the two books for international economics, Dominic Salvatore and Krugman and Obstfeld. Again, divide it into two parts, micro part of international economics and macro part of international economics. So micro part mein all models, Ricardo's model, of comparative advantage, or for that matter, Haberler's theory of opportunity cost, Heckscher-Ohlin model, very often asked questions from Heckscher-Ohlin, and then implication of Heckscher-Ohlin. अब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो शायद इससे कुछ सीख जाओगे ठीक से. अब जैसे तुम Heckscher-Ohlin प्रिपेयर कर रहे हो, तो कैसे प्रिपेयर करो? ये सभी मॉडल्स पे ट्रू है. रिकार्डो भी प्रिपेयर करोगे तो वैसे ही करोगे, और मैक्रो में क्लासिकल वगैरह भी प्रिपेयर करोगे तो वैसे ही करोगे. तो समझना मेरी बात, दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग Heckscher-Ohlin, आई एम गिविंग यू अ रिप्रेजेंटेटिव दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी मॉडल, दिस इज द वे यू शुड प्रिपेयर योर मॉडल. सो इन Heckscher-Ohlin, prepare the definition and explanation of the model. Then prepare your criticisms of the model. Prepare empirical evidence of the model. And prepare application of the model. अब आपके मन में आ गई application of the model क्या हुआ? So application of the model can be things like emissarizing growth. Application of the model is things like factor price equalization. ये एप्लीकेशन से मॉडल के. तो कोई भी मॉडल करो, रिकार्डो करो, हैबरलर करो, Heckscher-Ohlin करो, स्टैंडर्ड ट्रेड थ्योरी करो, क्रूगमैन करो फॉर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, लिंडाल करो,
other trade models like trades, life cycle theory in trade, product cycle theory, I'm sorry, in trade, karo, koi bhi model karo, you should know the ideas on how the model is defined, how it is explained, the criticisms, empirical evidence, and the applications of that model. Have that kind of a theory. So micro part gets prepared like that. You can prepare models with respect to Krugman's analysis on intra-industry trade. You can prepare models with respect to, which they have asked in the past year papers. So models can be asked with respect to the distance theory in trade and so on. तो ऐसे prepare करना है. और macro part जो है, उसमें balance of payment, exchange rate definitions, and then policy applications. और ये policy applications with respect to complete perfect capital mobility, imperfect capital mobility, using ISLM, then drawing that, understanding it, ये हमें समझ में आना चाहिए. तो ऐसे preparation होनी चाहिए हमारी. उसके अलावा trade theories prepared होनी चाहिए. Different trade theories, trade as an engine of growth, trade pessimistic theories like Pravish Singer, trade pessimistic theories later on that came along with respect to import substituting industrialization. एक comparison हमारे दिमाग में होना चाहिए between import substituting industrialization and export oriented industrialization. दोनों में क्या बेहतर है? That kind of a thing, and then taking it to subprime crisis, globalization, deglobalization impact of trade, WTO, TRIPS, TRIPS, etc. Then similarly, आपके जो ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं, CEPA, CECA, ये सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर्ड रखनी है. सैल्वाटोर में काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, बट करंट अफेयर्स के लिए इंटरनेट यूज़ करना पड़ता है, इकोनॉमिक सर्वे यूज़ करना पड़ता है. दैट ऑल वन हैज़ टू डू, एंड ऑल्सो वन हैज़ टू मेक श्योर दैट रीसेंट कवरेज इज़ देयर. Recent analysis is there. That has to be made sure. Like for 2021 mains, if you ask me, Brexit becomes quite an important question mark. And 2020 mains, it may or may not, but 21 Brexit can become quite an important question part. That kind of a thing. तो Brexit का क्या असर है? European Union की जैसी चीजें क्यों टूट रही हैं? That kind of a thing you should know, that why is European Union breaking up, or why did it break? Why Great Britain chose to exit? What will be the implication on other trade analysis that is happening? What will be the implication on India? ऐसे हमें सोचना है अपने दिमाग को. जब नोट्स बनाते हो, एक सिंगल पेज बनाओ और ये सारे इंप्लीकेशन एक जगह लिख लो. तो जब रिवाइज करोगे, when you will sit down to revise, you will be in a much better position to cover things in a shorter span of time. क्योंकि टाइम एक कंस्ट्रेंट होगा, तो शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में करना सीखना होगा हमें, कि छोटे कम टाइम में कम समय लेकर छोटी सी जगह से बड़ा रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं. तो ये हेल्प करेगा अगर तुम ऐसे अपने नोट्स बनाते जाओ एक जगह पे. अगेन व्हेन आई टीच यू इन द क्लास, आई ट्राई डूइंग दिस ओनली इन द क्लासरूम डिस्कशंस. यही कोशिश रहती है कि तुम्हारे नोट्स ऐसे बन जाए, वो हार्डवर्क मैं कर लूँ और तुम्हें वो बेनिफिट मिल जाए कि तुम्हारा टाइम बच जाए. वो टाइम तुम्हें ना देना पड़े, समझने का टाइम, नोट्स बनाने का टाइम, क्वेश्चंस देखने का टाइम, वो करने की जरूरत ना हो. जैसे मैं क्लास में तुम्हें ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, अभी जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं 14th से, तो वहाँ क्या करता हूँ करूँगा, या जो पहले भी किया है, what I try doing is in the classroom is that you do a topic, I give you questions on those topics, you write answers, and then next week I give you answer to those questions. So इस तरह से आपकी question answer writing practice, preparation ये थोड़ी complete होती चली जाए. That is the way we will go about it. Then in development theory, when it comes to preparing for development theory, what we will do, you can use Thirwal, that's a good book in development, or Todaro and Smith. But one thing with development is that there is no single book which covers all the topics. They are the closest. ये 70-80% cover कर लेते हैं. These books cover 70 to 80%. लेकिन कोई एक single book नहीं है जो सारी बातें cover कर सके. तो उसमें तुम्हें यूज़ करना पड़ता है. अगेन इसके साथ इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा. अलग-अलग इंडियन ऑथर्स के कुछ बुक्स यूज़ करने पड़ेंगे. अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो. अगर खुद से नहीं प्रिपेयर कर रहे, if you're not preparing it on your own and leaving it to me, again I do that job for you. In this Thirwal, Todaro, Smith, see, mainly again in development theory, Harrod Dormer is where you should focus. They have asked us. अब जैसे Harrod Dormer में भी instability का question सबसे ज़्यादा पूछते हैं. Harrod's instability. तो वो prepared रहना चाहिए कि ठीक है भाई 3 बार पूछ लिया, हो सकता है फिर से आ जाए. So we should be prepared on those. Similarly, Solo we should be prepared on. Romer we should be prepared on. AK model we should be prepared on, and so on. So models should be prepared well. Again, how to prepare the model? The statement of the model,
diagram of the model, empirical evidence of the model, criticisms of the model, and if there is any application of the model in practical world, then that. हमेशा ऐसे ही तैयारी करो. Statement, illustration, there is diagram, empirical evidence, criticisms, and if there is any practical application. Prepare it like that. Apart from that, in development theory, you should be well prepared on different indices like HDI and multidimensional poverty index and physical quality of life index and so on. You should be prepared on these indices. Apart from that, you should be prepared with role of agriculture. This they ask you pretty often. So we should have good preparation on role of agriculture in development. And then, there are typical theories. कुछ typical theories जरूर याद रखो, जैसे balanced growth, unbalanced growth, Myrdal की theory, ये पूछते रहते हैं हमें. तो Myrdal की theory, balanced growth theory, unbalanced growth theory, we should have these prepared in our mind. And then some current affairs things like role of state and role of market. ये debate पूछना बहुत common है. इंडिया में तो चल ही रहा है ये डिबेट. सो दे कैन आस्क यू दिस डिबेट दैट रोल ऑफ स्टेट क्या है, रोल ऑफ मार्केट क्या है, करंट सिचुएशन में क्या तुम्हें लगता है रोल ऑफ स्टेट क्या होगा, रोल ऑफ मार्केट क्या होगा. This kind of question they can put to you. Sometimes they mix paper 2 with paper 1. So they can ask you question in Indian context, giving it a global outview. तो ऐसे questions भी पूछे जा सकते हैं. जैसे वो तुम्हें बोल देंगे that examine the role of government in development policies in India or development policies in developing economies after globalization. तो India centered answer लिख सकते हो यार कि 1991 के बाद role of government कैसे change हुआ, role of market कैसे change हुआ, क्या implications बनी, Washington consensus क्या था. Development theory पढ़ते हो ये चीज़ें ज़रूर देखोगे. For environment, a good thing you can do is you can read through Tirwal's chapter and have a complete historical linear view of what events happened. ये दो बातें जरूर प्रिपेयर करना environment topic के लिए. एक तो थिरवाल से पढ़ लो चैप्टर, वो काफ़ी है. उसके अलावा historically जो conclaves हुए for climate change, for animal rights protection, इनको ज़रूर देख लो. स्टॉकहोम से शुरू किया 1973, फिर रोम की बात की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की, एंड सो ऑन, रियो डी जेनियरो, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारे कवर करते गए टिल पेरिस, कैटोविस, किगाली. तो एक कवरेज पूरी ब्रॉड हो जानी चाहिए दिमाग में कि अच्छा बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या कोशिश की गई है, व्हाट हैज़ बीन द ह्यूमन एंडेवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉपिंग climate repulsion or with respect to making climate change restrictions. तो आपके पास आंसर तैयार होना चाहिए. So development theory will be based on that, and do attempt the models. If they ask you models, that's the best thing to do, because if they ask you models, you are best placed. तो ज़रूर attempt करो models को, क्योंकि models आंसर करने में benefit क्या है, नंबर पूरे मिलते हैं. assumption लिखना है, assumption के बाद model state करना है, model state करके graph बनाना है. After drawing the graph, next step is talk about the empirical evidence and criticism. 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर तुमने ये लिख दिया तुम्हारा नंबर पूरा. क्वेश्चन पढ़ के लिखोगे कि मांग क्या रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक मांग रहे होते हैं हर क्वेश्चन में. That's another thing you need to know, that in every question they will ask you something specific. So if they ask you something specific, the concentration of the answer should be on that specific. That how to write an answer, the focus has to be, if they are asking me critically analyze the role of convergence in solo model, तो मुझे solo model explain नहीं करना. I have to talk about solo models equation in one paragraph, and the question should be answer should be dedicated to convergence, unconditional, conditional, empirical evidence on conditional, how solo model has worked over the time period. ये बात करनी है. तो तुम देखोगे कभी कभी लगता है बहुत लिखने को है, कैसे लिखें, तो ढूंढना हमेशा, whenever you feel there's too much to write and how do I contain it, always look for the key word in the question, that what are they asking me to write on. Model can be huge, but they may be asking a pointed point of thing of the model. Focus on that part, that will help you write better answers. Similarly, when it comes to money and banking, again unfortunately there is no single book or source that you can refer. Normally what you can do is you can use Delhi University readings for money and banking that they give you. And apart from this, there is some few things that you can get from typical books like Jhingan or S.B. Gupta. But to be honest to you, these books don't help us beyond a point. Rather, apart from DU readings, you can use RBI Bulletin. And good thing is that there are very restricted questions on money and banking. So one, they will ask you monetary theories. और ये monetary theories भी बड़े restricted हैं. Fisher, Cambridge,
केन्स, बॉमोल, टोबिन और फ्रीडमैन। यही मॉनेटरी थ्योरी पूछते हैं, आप ये तैयार करके रख लो। फिशर, कैम्ब्रिज, बॉमोल, टोबिन, फ्रीडमैन एंड केन्स, ये मॉनेटरी थ्योरीज। फिर कैसे तैयार करोगे? स्टेटमेंट, एविडेंस, समथिंग स्पेसिफिक अबाउट देम एंड एम्पेरिकल एविडेंस एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ दीज। तो ऐसे तैयार करके रख लेना इन थ्योरीज को। तो एक तो ये मॉनेटरी थ्योरीज पूछते हैं हमें। इसके अलावा एच थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, ये बहुत कॉमनली पूछी जाती है। तो एच थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई कुछ भी नहीं, when they ask you H theory of money supply, it's actually the money multiplier approach, that developing money multiplier, deposit multiplier, ये पूछी जाती है, ये तैयार करके रख लो। और मनी मल्टीप्लायर में exogenous impact, money multiplier, exogenous and endogenous distinction of money multiplier, ये हमें तैयार करके रख लेना है on money banking। अब देखना, the questions they have asked us has contained itself within these. They have kept asking us questions in these. Yes, sometimes they can ask you questions on inflation targeting, monetary targeting, interest rate targeting. That is money supply questions. So do prepare your central banking, benefits of monetary theories, role of central bank in development. These topics have to be prepared. So apart from these broad topics, then you should prepare the tools in the hands of central bank, quantitative tools, qualitative tools, central banking theories, like money supply control or interest rate targeting or inflation targeting. साथ में prepare करो how does central bank make policies with respect to monetary management in an economy. ये sterilization and so on, ये तैयार करना है हमें। तो money banking में ये ठीक है। Do not spend your time preparing capital markets in these. There has been no question in the mains exam from bond market, share market, etc. तो अपना टाइम खर्च मत करो। Derivatives, बहुत लोग अपना इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ये चीज़ें करने लग जाते हैं क्लास के अंदर भी। बचना इन बातों से, हमें नहीं करना ये सब। कैपिटल मार्केट नहीं पूछा उन्होंने आज तक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, तो पेरिफेरली हमें पता होना चाहिए बस डेफिनेशंस, बॉन्ड मार्केट की प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में, और सिक्योरिटाइजेशन क्या है, ये चीज़ें पता होनी, रेपो रेट क्या है, रेपो ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। यू शुड नो दीज बेसिक्स, बट यू डोंट नीड टू गेट इनटू टू मेनी डिटेल्स ऑन दीज। अपना टाइम बचाओ, इससे अच्छा इन चीज़ों पे फोकस करो। 80% चीज़ें तो यही कवर कर लेंगे। साथ में सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, सेंट्रल बैंक टूल्स, that should cover Basel norms, that should cover things for you. Similarly, in public finance, it's very well defined again. So when it comes to public economics, one, you should know your public goods theory well. Pricing कैसे होती है public goods की, public goods होते क्या हैं. Other than that, you should know your taxation, the canons of taxation, optimum rate of taxation, जैसे Laffer curve theory, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. और impact of taxation, who bears the incidence of tax, direct tax, indirect tax, that we should know. And then public expenditure. Again, on public expenditure, you should know your theories very well. In public expenditure, you should know your theories very well, as good as possible. तो theories कैसे? जैसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है, Pigouvian theory on public expenditure क्या था, या Lindahl का theory क्या था on public expenditure, or we should be knowing about Wegener's hypothesis on public expenditure, Peacock-Weisman hypothesis. तो एक लिनियर सा ट्रेंड पता होना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे ग्रो हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या क्या रोल था केन्शियन इकोनॉमिक्स का इसमें, ऑल दैट वी शुड नो. एंड देन अबाउट फिस्कल कंसोलिडेशन, so role of fiscal deficit, current account, revenue deficit, primary deficit, what does it mean by consolidating the fisc, how subsidies can be made more rational, how taxes can be made more rational, all these things you should know. And in the context of India also, like GST, what role does it play, what role is played by direct tax reforms in India, what role can be played by indirect tax reforms, subsidy reforms in India, all that you can prepare. The books you can use here, Musgrave is a good book to read, Musgrave and Musgrave. But again, Musgrave doesn't cover India-centered things. So for that, you can use H.L. Bhatia. These are the two books normally I refer for you for public economics. I think they should be good enough to cover for you the topics. H.L. Bhatia will cover for you even fiscal federalism, role of local government in fiscal policy making, and so on. So वो तुम्हें
कवरेज दे देगा। अगेन इफ वी आर टुगेदर, अगर हम लोग साथ में कर रहे हैं, अगर तुम मेरे साथ कर रहे हो, तो इन किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स विल बी सफिशिएंट। फिर वो नोट्स पढ़ो, दैट विल बी गुड इनफ। देन so this is for paper 1. One thing that I need you to know is when you are going for paper 1, do make sure that you are prepared well on micro, macro and international economics and all models on development theory. क्योंकि इनमें पक्के पूरे नंबर मिलते हैं। अगर तुमने माइक्रो के मॉडल लिख दिया ठीक से, मैक्रो का मॉडल लिख दिया, इनमें नंबर मिल जाते हैं पूरा हमें। तो माइक्रो, मैक्रो, development economics models and international economics, we are well prepared on these so that if they ask me a model, I'm writing it straight away. Even money banking models, तो models वाले question try कर पाओगे अगर, तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन if you are gifted in your writing ability and you write well and you can present the discussions well, then even discussions on environment, discussions on poverty, discussions on inequality, you can write well those questions and you can definitely get good marks. So that should be your choice. लोगों के कहने पे मत जाना। मैंने देखा है बहुत बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट किए मॉडल्स, अनअटेम्प्ट किया डेवलपमेंट के क्वेश्चंस और नंबर अच्छे लेकर आए, बिकॉज विद गुड प्रेजेंटेशन दे कैन ऑल्सो अट्रैक्ट एग्जामिनर्स इंटरेस्ट एंड यू कैन स्कोर प्रेटी वेल इन दैट। मॉडल्स यू शुड बी सर्टेन, ग्राफ शुड बी क्लियर, वेल लेबल्ड। ग्राफ की लेबलिंग सही नहीं की तो नंबर कटते हैं बहुत। देयर इज नो पॉइंट लूजिंग मार्क्स व्हेन यू नो थिंग्स, एंड टाइम मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। That when you are writing your answers, you should keep a view on the time, that okay, this much time I have spent and this much more I have. So, you know, your movement should go on. आप थोड़े तेज लिखने लग जाओ, ग्राफ्स जल्दी बना लो, पेन से बनाओ या पेंसिल से बनाओ कि कोई दिक्कत नहीं है। You can draw your graph with pen as long as you are certain that you won't have to scratch it off. अगर अच्छे से सोच समझ के ग्राफ पेन से भी ड्रॉ किए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर लगता है नहीं भाई, maybe I may go wrong and I may have to scratch it off, तो उतनी जगह ही नहीं होती पेपर में। You don't have as much of the space. So better then is you use a pencil to draw your graph and use your pen. So it depends again on, take your call कि आप किस तरह के हो, वो डिसाइड करेगा आप कैसे अपने एग्जाम में खुद को प्रिपेयर करके जाते हो। Then, you know, in paper 1 there is one more question that I am asked often. That question is that, sir, do we need to refer all the reference books? No, choose your best source. You know, choose your best source. हर टॉपिक के लिए तुम्हारे पास प्रिपरेशन होनी चाहिए। जब मैं तुम्हारी तैयारी कराता हूँ, when I prepare you for the exam, मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि ये किताब कवर होगी, वो किताब कवर होगी। मेरे दिमाग में होता है ये टॉपिक बेस्ट कैसे कवर हो सकता है। This topic that they have mentioned in the syllabus and the type of questions they have asked from this topic in the past year papers, how do I make sure that taking a cue from those past year questions, एक तो देख लिया कि भाई past year question में क्या पूछा है, वहाँ से क्यों ले लिए, कैसे ठीक है, एक हिंट मिल गया कि ये आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, फ्यूचर में इससे मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे उन्होंने एक बार बेन्स लिमिट प्राइसिंग थ्योरी पूछ ली, तो ठीक है भाई, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की थ्योरी भी पूछ लेते हैं हमसे, तो अगले बार से 2-4 वो थ्योरी भी प्रिपेयर कर लेंगे तैयारी करते हुए। दैट इज माई मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग यू, एंड देन यूजिंग वेरियस सोर्सेज टू यू नो गिव यू द मटीरियल, सो दैट द मटीरियल यू हैव इज अ मिक्स ऑफ ऑल दोज सोर्सेज। नोट्स बने हुए हैं हमारे, एंड वी शुड कीप making sure that writing ability हमारी improve हो by practice. You know, when we will write 50-60 questions, तब जाकर writing ability पे control आता है। तो वो 50-60 क्वेश्चन लिखना एक चैलेंज होता है, तो प्रिपेयर करते हुए वो भी होना चाहिए कि हर हफ्ते कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखते रहे, तो ओवर 25 वीक्स 25 वीक्स 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक सवाल ये भी पूछते हैं मुझे दैट कितना टाइम लगता है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। Ideally, it should take you approximately 300 hours to 400 hours, anything in between that, for a complete preparation of economics optional when you're sitting down and doing it. So 300 to 400 hours if we take 4 hours each every day, believing that you will give 6-7 hours to GS. तो अगर 6-7 घंटे GS पढ़ते हो, 4 घंटे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ते हो, तो 4 घंटे मान ले अगर, तो रख लो 100 दिन का प्रिपरेशन है 400 घंटे के लिए, तो 3-3.5 महीने चाहिए कि हम तसल्ली से उसको तैयारी कर सके, अच्छे से पढ़ ले और लिख दें। अगर आपने कोचिंग ले ली है तो इन एनी केस दैट्स द जॉब ऑफ द ट्यूटर, दैट आपका तैयारी करा लें, आपके क्वेश्चन आंसर लिखना सिखा दें। द मेथोडोलॉजी आई यूज आई विल डिस्कस विथ यू इन अ वाइल, बट दैट इज हाउ यू शुड बी डूइंग अबाउट इट। द सेकेंड पेपर दैट यू आर आस्क्ड, पेपर 2, इंडियन इकोनॉमी, यहां मैंने एक चीज देखी है, बिफोर 47 they have asked 24 questions, and this data I am giving you from papers analyzed between 2013 to 19. इन दिनों में जो पेपर्स आए इनको एनालाइज करके बोल रहा हूँ, because the syllabus changed after 2012. So 2013 onwards we had a new syllabus, so I'm analyzing based on that data or those sample questions. So before 47, 24 questions.
And between 1947 to 1991, there have been approximately 36 questions. And then after 1991, this has been 27 questions. And this is 36 to 40 questions, approximately. And then after 1991, there have been approximately 110 questions. So dominated by questions after 1991. And then there are, if you ask me, there are approximately 20 questions that are miscellaneous, that cannot be clubbed anywhere of these three. So this is your miscellaneous. तो ये एक बात दिमाग में रखो कि आफ्टर 1991 बहुत ही डोमिनेंट रहा है हमारे क्वेश्चन पेपर में. अगर 2018-19 का क्वेश्चन पेपर देखें तो वहाँ एक और एनालिसिस तुमसे शेयर करता हूँ. 2018 और 2019 में इन्होंने क्या किया है, दैट देयर हैव बीन 2 compulsory questions, 2 compulsory questions, question 1 और 5 के 2 parts, 2 compulsory questions from before 1947, and then question number 2 has been from before 1947. मतलब एक ऑप्शनल क्वेश्चन में दे दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन ABC. तो एक तरह से 70 मार्क्स के क्वेश्चन बिफोर 1947 से पूछ रहे हैं. ये 2018-19 में किया. That 70 marks question from before 1947. और वैसे ही 70 marks, like 2 questions in compulsory and one full question from option from between 47 and 91. अब समझो कि तुम्हारा पूरा पेपर 400 नंबर का होता है. The entire paper is of 400 marks. Because there are 6 questions of 50 marks each, so 300, और 2 compulsory question 50-50 नंबर के, so 400. उन 400 में से 140 questions were covered by these topics, और 260 marks by India after 91. तो अब focus क्या है? That focus on India after 91 as much as possible. That is my point. That focus on India after 91, good enough. वो तैयारी पूरी होनी चाहिए. उससे एक और बेनिफिट है, GS पेपर 3 का इकोनॉमी पार्ट अपने आप प्रिपेयर हो जाता है, तो तुम ज़्यादा डिटेल में कर रहे हो उन चीज़ों को. तो चलो एक चीज़ पे आते हैं. Before 1947, again, there are typical things you can prepare. Prepare on agriculture. In agriculture also, it should be permanent settlement and land system. Permanent settlement तो एक बात लिख रहा हूँ मैं, लेकिन permanent settlement, रैयतवारी, महलवारी, temporary settlement, entire land system and its applications on economy. एक तो ये prepare होना चाहिए, और दूसरा commercialization of agriculture, ये prepare होना चाहिए. From agriculture, these 2 things, if you are prepared, you are better off. Then similarly, industries, you should prepare on deindustrialization. The role क्या था deindustrialization में Britishers का? You should prepare on railways, again benefits and problems due to railways, and you should prepare on cotton textile, jute. अभी तक पूछा नहीं, but मुझे doubt है steel can be asked, but cotton textile and jute they have asked in the past years. तो ये industry में prepare कर लो, और उसके बाद railways में सारी चीजें pros and cons both. ड्रेन ऑफ वेल्थ जरूर प्रिपेयर कर लो. ड्रेन ऑफ वेल्थ के तीनों ही फेजेस, सो यू शुड प्रिपेयर योर ड्रेन ऑफ वेल्थ विथ रिस्पेक्ट टू 1750 to 1800, 1800 to 1900, the industrial drain of wealth, and 1900 to 1947, the financial drain of wealth. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम ड्रेन ऑफ वेल्थ, मॉनेटरी सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए. गोल्ड स्टैंडर्ड एंड रेशियो कंट्रोवर्सी, तो मॉनेटरी सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए. इफ यू आस्क मी, दिस इज वेयर दे हैव होवर्ड अराउंड इन द पास्ट ईयर पेपर्स. मोस्टली द क्वेश्चन हैज बीन दैट. एंड एक क्वेश्चन जो वो घुमा फिरा कर पूछते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. ये असेसमेंट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल अच्छा था, बुरा था, एग्जैक्टली कैसा रहा इंडिया के लिए, ये इम्पैक्ट असेसमेंट पूछते हैं वो हमसे. तो इंडिया बिफोर 1947 दे आर मोस्टली होवरिंग अराउंड दिस, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री,
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड से कनेक्ट कर देते हैं उसे, दैट व्हाट वाज एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रीज में कवर कर लोगे सारा. एंड देन सिमिलरली ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड मॉनेटरी सिस्टम्स इन इंडिया. ये हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है. अ गुड बुक यू कैन रेफर फॉर बिफोर 47 इज तीर्थंकर रॉय. Tirthankar Roy doesn't cover things entirely, but that's a good enough book to read. Tirthankar Roy's book is a good enough book for India before 47. अब India after 47 के लिए you will have to refer different sources. India after 47, you can use Mishra and Puri or Uma Kapila as your base book. बेस बुक माइंड यू डोंट हैव टू यूज देम इंटायरली. ये बेस होगा हमारा कि ठीक है टॉपिक्स. अगेन अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो मेरे साथ तो फिर ये बुक्स आप नहीं ज़रूरत आपको देखने की, वो सब हेडेक मैं ले लेता हूँ. दैट ऑल द नोट्स ऑफ दैट आई गिव यू विल बी सफिशिएंट. बट अगर तुम खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये किताबें तुम पढ़ सकते हो, मिश्रापुरी या उमा कपिला में से एक. अगर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हो तो उमा कपिला पढ़ सकते हो. इफ यू आर नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड एंड समवन कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और पॉलिटी बैकग्राउंड और हिस्ट्री बैकग्राउंड, एनी अदर बैकग्राउंड, देन मिश्रा एंड पुरी इज अ better pick for you. Apart from these, you will have to read economics survey, and you will have to read chapters from India yearbook, chapters on agriculture, chapters on energy, chapters with respect to finance, economy, India yearbook. You will have to read RBI bulletin, and you will have to read particular articles from Yojana. These things you must know if you are preparing on your own. Again, when I prepare you, I cover all this. And when I prepare you, what I also do is I refer Ministry of Finance working group papers, RBI working group papers. I also refer newspaper articles so that we are in sync. क्योंकि इंडिया आफ्टर 91 डोमिनेंट है, तो जब इंडिया आफ्टर 91 डोमिनेंट है तो हमारा करंट अफेयर बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए. तो जब मैं भी आपको प्रिपेयर कराता हूँ यही दिमाग में रखता हूँ और आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर खुद भी प्रिपेयर करो तो ये तरीका यूज कर सकते हो. इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, यूज दिस मेथड. इट हैज वर्कड अ लॉट फॉर माय स्टूडेंट्स. दे हैव बीन एबल टू डू वेल. तो मुझे लगता है मैं आपसे शेयर कर लूँ कि जो खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो वो अपना तरीका ऐसा ही बना लो थोड़ा. मुझे लगता है इससे ज़रूर मदद मिलेगी. तो तरीका यही रखो कि अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रांग बनाओ. जो चीज़ें देखो ज़्यादा हो रही हैं बार बार, जैसे अभी फार्म बिल हुआ, RCEP हुआ, बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, इनके ऊपर हमारे दिमाग में 200 वर्ड का एक आंसर तैयार रहना चाहिए कि अगर मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा. आई मस्ट हैव दैट प्रिपेयर्ड. सो दैट वेज यू विल बी, एंड कनेक्ट सेकंड पेपर टू फर्स्ट पेपर. So role of agriculture that you have studied in development theory, bring that across in discussing things on farm bill in paper 2. तो examiner को बहुत अच्छा लगता है ये, that when you connect paper 1 with paper 2, theories of one with the practical analysis of another, वो बहुत अच्छे से वो appreciate करते हैं. उनको लगता है वाह भाई ये बच्चा पढ़ कर आया है, इसको नंबर देते हैं. So that ways you can work on. Apart from these sources then, in Indian economy after 47, again, linear trend of GDP, ये जरूर अच्छे से तैयारी करो. आफ्टर 47 टिल नाउ, अब तो 20 भी इंक्लूड हो जाएगा. और जीडीपी ही नहीं, जीडीपी पर कैपिटा, सेविंग इन्वेस्टमेंट का लिनियर ट्रेंड, ये करना है. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मनी और मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूडिंग बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी ट्रेंड, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी. Broadly again classify yourself like this, that classify on the trends of GDP, what happened during the planning period, what were the different 5-year plans, what was the thrust area of different 5-year plans. तो अगेन अगर मुझसे पूछो, आइडिया देने के लिए कह रहा हूँ कि अगर सोचो ठीक है प्रिपेयर कैसे करें, तो जैसे तुम तैयार कर रहे हो लिनियर ट्रेंड
in GDP. तो टाइम पीरियड ले लो कि ठीक है, व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट, सेविंग्स रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में फिर कैपिटल गुड्स का इंडस्ट्री, और इनका एक आइडिया ले लिया इन पीरियड बिटवीन 1951 टू 56, 56 टू 61, 61 टू 66, 5 ईयर प्लान के हिसाब से, और ऐसे करके आ गए फ्रॉम 85 टू 90। फिर एक एनालिसिस कर लिया 91 क्राइसिस, क्या क्या हुआ जिसकी वजह से ये क्राइसिस हो गया। इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लिए, जैसे 91 का क्राइसिस, ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट लिनियर ट्रेंड पे, तो एक्सप्लेनेशन दे दोगे कैसे, ठीक है भाई 51 से 56 में ये ग्रोथ हुआ, कारण ये था, this was the growth rate, this was the reason, these were the problems that persisted. 56 to 61, this was the growth rate, these were the reasons, and these were the problems that persisted, and so on. So that will allow you to have a complete overview of how Indian economy has evolved from 51 or 47 till 2019-20, and what have been the reasons that have come across, and so on. So that will help you consolidate your answers better. कि आपसे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो यही बातें पूछते हैं, कारण क्या है, why did it happen, and what is your analysis of it. So India static part 47 to 91, they will keep pushing you on this, that understand the reasons, why it happened, what was the evolution process, and how they, like say industries, if you ask me. So if you are analyzing for industries, then what was the Industrial Policy Resolution 1948? What was the Industrial Policy Resolution 1956? What was the Industrial Policy Resolution 1980? Then 1991, what were economic reforms, first generation? What is second generation economic reforms, industrial reforms? Why they have not been done? What is the benefit? And then separate page for small scale industries, how they evolved in India, what was the policy used before 91 to help small scale industries, how those policies resulted in problems, then what was the policy used after 1991, how it has given us result, what more can be done. ये approach बनाओ, यही सिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि अपना अप्रोच ऐसा बना लो, तैयारी जब कर रहे हो ऑप्शनल की, यही अप्रोच से तैयारी करनी है हमें। अगर तुम फिस्कल पॉलिसी तैयारी कर रहे हो, जैसे इफ वी टॉक अबाउट इट, तो अगर तुम फिस्कल पार्ट की तैयारी कर रहे हो तो कवरेज ऐसे होनी चाहिए, फिस्कल ट्रेंड्स इन इंडिया, फ्रॉम 1951 कि फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड और रेवेन्यू डेफिसिट का ट्रेंड, एक हमें ये पता होना चाहिए। Then fiscal consolidation, इसका मतलब क्या होता है, FRBM एक्ट का क्या रोल है इसमें। Then tax reforms, right from the beginning इंडिया में क्या क्या टैक्सेशन सिस्टम था, क्या टैक्स रिफॉर्म्स हुए, ऐसे ही सब्सिडी रिफॉर्म्स, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, and then fiscal federalism, फाइनेंस कमीशन के रोल्स, फाइनेंस कमीशन ने क्या रोल प्ले किया, क्या किया जा सकता है और कैसे सेंट्रल स्टेट को बेटर कोऑर्डिनेशन में ला सकते हैं, हाउ कैन वी मेक सेंट्रल एंड स्टेट परफॉर्म बेटर टुगेदर, ये तुम्हें कवर करना है। अगेन अगर तुम मुझे पूछो कि अगर सर ठीक है फिस्कल पे नोट्स बनाए तो क्या क्या करें, तो ऐसे कवर कर लो अपने फिस्कल के नोट्स, और इंडिया ने क्या एफर्ट्स किए हैं अभी तक और क्या एफर्ट्स और किए जा सकते हैं, what has India done till now, what further can be done so that we can get a consolidated fisc and we can make sure that we have a better glide path to development. ऐसे सोच के अपने आंसर्स डेवलप करने हैं तुम्हें, so every topic should be covered in that manner. That is what I expect you to do, that every topic should be covered in a manner where you are covering it with respect to all possibilities of questions that they can ask us, even fiscal monetary coordination. तो ऐसे कवर करने की कोशिश करो। तो ये एक ओवरव्यू था अबाउट हाउ यू शुड प्रिपेयर विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जैसे इफ आई एम नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड कैन आई ऑप्ट फॉर इट, यू कैन श्योरली ऑप्ट फॉर इट if you are someone who feels interested in doing economics. अगर तुम इकोनॉमिक्स करना तुम्हें अच्छा लगता है, if you feel interested in economics, read your 11th and 12th NCERT if you are a non-economic student. तो 11th की माइक्रो की NCERT पढ़ो, 12th के मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी पढ़ो। read 11th माइक्रो and 12th मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, देखो तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं।
If you feel you're liking it and you're developing interest in it, go for it. It gives good enough marks. This year we have 7 people in top 100 from economics optional. So if people tell you it doesn't give marks and people don't qualify, well, this year अब तो नहीं बोलना चाहिए कम से कम, क्योंकि बहुत बच्चे नंबर ला रहे हैं, हर साल लोग क्वालिफाई करते हैं, मार्क्स लाते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. तो ये देख के चलो कि अगर इंटरेस्ट है तो जरूर प्रिपेयर करो. इट्स अ गुड कोर्स, इट्स नॉट अ वेरी लेंदी कोर्स. लोग कहते हैं बहुत लेंदी कोर्स है, नहीं लेंदी नहीं है. अगर तुम प्रिसाइजली तैयारी करो तो ये 3, जैसे मैंने बताया, 350 से 400 घंटे में दोनों पेपर्स हो जाते हैं. तो मतलब आपको 75 दिन से 100 दिन देना पड़ेगा, 4-4 घंटे रोज, और आपके ये दोनों पेपर्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे. Then another question that I am asked very often is that is it very dynamic and do we lose a lot of time preparing the dynamic portion? No, you don't again, because जो dynamic portion है, जो Indian economy के parts change हो, क्योंकि पहला पेपर मैंने आपको डिटेल में बताया, you see that's full of models. Now models can't be dynamic. जो मॉडल एक बार है वही हर बार है, तो मॉडल तो डायनेमिक होगा नहीं. Dynamism कहाँ है? सेकंड पेपर में. In second paper, the things can keep changing with respect to Indian economy after 91. But that you will have to keep changing and keep learning on your own because of paper 3 GS2. So in that sense, it's not a big deal. And plus, they don't ask you things on only the changed events. एक historical input चाहते हैं वो कि आपकी analytical power strong हो. तो अगर आप if you are someone who has a good analytical power, who loves doing economics well, then surely you must go for it. Student of economics background must go for economics optional because you are used to these challenges. आपको पता है अगर कोई ट्रिक प्ले करेंगे तो कोई नया सब्जेक्ट अगर लेते हो ये सोच के कि वो आसान है, बट सोचो हर सब्जेक्ट का अपना एक सोल होता है. Every subject has a soul. That subject will ask its own questions. You may not even be able to catch the trick. In economics, you have studied it for some time, you would know the tricks. So students of economics background, students with technical background, students who have interest in economics, economics is a good enough subject for you. You must opt for it. Very dynamic and very rewarding. I can tell you that. Another question I'm asked is that, sir, when we prepare for economics, people say it will be tough to prepare and there are too many technical things involved. They are not. They are models. You have to learn the models. Yes, if you're someone who doesn't like graphs, if you're someone, there is no maths in this economics. That I can tell you assuredly. That the fear people create कि बहुत ही mathematical है. नहीं, UPSC का syllabus mathematical नहीं है. UPSC syllabus will not be mathematical. UPSC syllabus is descriptive. तो हमारे syllabus में mathematical नहीं है, descriptive है, graphical है, analytical है. So if you're someone who likes doing your graphs well, if you understand x-axis, y-axis, etc., go for it. Then it is not so much of a difficulty for you. तो एक ये सवाल भी पूछा जाता है जो मैंने सोचा तुम्हें जवाब दे दूं. और जो जैसा मैंने कहा किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है. मैंने बहुत सारी किताबों के नाम लिख दिए. I wrote several names of the books, but that's not necessary. You have to refer each and every book. Go for your best source. I'm trying to create notes, or the notes that I have created for the optional, I've tried doing that should become the source from where we can do things as good as possible. So that's what we will try doing. That we'll create a source single part where you will be as good as possible. Then there's another question that is asked very often that I see is that while answering things in examination, is economics optional a tough paper where they ask us too many tough questions? No, the toughness level of every paper is similar. Economics optional is not a tough paper to answer if you have prepared yourself well and if you are again someone who knows how to answer questions by practice. तो अगर तुमने practice कर रखे हैं 5-6 papers, 6-7 papers लिख दिया खुद, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर ली, तो वो तुम्हारा काम कंप्लीट कर देगा. तो एक तो ये मैं बताना चाहता था तुम्हें. Another question asked from me is how will you prepare us if we come to you? What will be your methodology? My methodology will be I expect you to have read only till 12th. मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे 12th पास हैं और उसके बाद मैं ही उन्हें पढ़ा रहा हूँ. So I will take it from very basics. I will start with very basics of economics. I will teach you all things from the basics. But I will expect you to have read NCERT. अगर तुमने NCERT भी नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी. So you must have read NCERT. I will give you my own notes. You will not have to read anything beyond those notes. जो notes मैं आपको दूँ उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना. आप सिर्फ वो notes पढ़ो. मैं आपको पूरे confidence से ये बोल रहा हूँ कि उन notes के अलावा आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. With all confidence and all humility, I am telling you that the notes I will give you for your preparation, you will not have to read anything beyond that for either paper 1 or paper 2. I will keep uploading them as and when I keep discussing the topics with you.
We will have answer writing practice first during the course discussion. So every week 2 days will be devoted, half an hour each, to discussing 2 questions on past year paper or current paper possibility and so on. And then अभी जो कोर्स मैं आपके साथ लॉन्च कर रहा हूँ 14th जनवरी से, what I am doing in it is I have combined the test series with the course. So we will finish the course by sometimes around first week May. तब तक हम कोर्स खत्म करेंगे 14 जनवरी से लेके आप रख लो 30 अप्रैल का मेरा एम है, लेकिन मैं 7 दिन और आपसे हाथ में ले रहा हूँ, तो 7 मई तक 7th मई तक हम कोर्स खत्म कर लेंगे. 14th April till 7th May we will finish the course. Then you can take your break for prelims 2021 people, और फिर रिवाइज करेंगे पूरे कोर्स को बिटवीन जून एंड जुलाई, एंड जून टू एंड अगस्त थ्रू टेस्ट सीरीज. और ये टेस्ट सीरीज कोर्स का पार्ट है, आपको कोई फीस अलग से नहीं देनी. The test series is a part of course, no extra fee to be paid for this if you are joining the course right now. अभी जनवरी में अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो कोई टेस्ट सीरीज के लिए फी नहीं देनी अलग से, हम रिवीजन करेंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू. तो 7 टेस्ट का सीरीज बनाया है मैंने, जिसमें 4 तो कंप्लीट पेपर का टेस्ट हो गए और 3 टेस्ट होंगे ब्रेक करके थोड़े पेपर्स को, फर्स्ट पेपर को. तो 7 टेस्ट का सीरीज करेंगे, 7 या 8 टेस्ट, वो मैं तुम्हें डिसाइड करके बता दूंगा. टेस्ट का सीरीज करेंगे जो सबके लिए अलाउड है, जो भी लोग इस कोर्स के पार्ट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दैट विल बी टू रिवाइज फॉर मेंस 2021. सो फर्स्ट वी विल बी कवरिंग इट the course material and then test series to revise for mains 2021. जो टेस्ट सीरीज में मैं आपको हर टेस्ट के लिए 2 क्लासेस दिया करूंगा. For every test also you will have 2 classes each. One before the test and one after the test discussing the test paper. You know, that I will give you the lectures. तो ये तरीका होगा मुझे आपको रिवीजन कराने का. आंसर उसके अलावा हर वीक में 2 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा लिखने को, और उन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे अगले वीक तक लिखोगे आप, और मैं क्लास में डिस्कस करूंगा कि क्या आंसर होना चाहिए था. I will give you 2 questions to write in every week and you will write those answers over the week, and next week I will discuss with you over half an hour. As I told you, in the past I saw that I could not find time to discuss those questions. So I have made classroom of 3 hours each this time, and in those 3 hours the last half an hour will be devoted to discussing question paper, discussing current affair and so on. You know, so 2.5 hours we'll study the theory, and last half an hour we'll discuss other things like question paper, current affair discussions, some particular event happening around us, newspaper discussions. We will do that in those half an hour. ये मैं आपकी तैयारी कराऊंगा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ाते हुए. साथ में we will make a telegram group of yours. तो उससे क्या होगा, even your doubts that remain in the class, if you want to ask me on the group, you can put your question on the group. मैं तो आंसर कर ही सकता हूँ, कोई और आपके दोस्त भी आंसर कर सकते हैं. So it will keep the learning continuous. You know, the learning will be continuous that way. तो अपनी तैयारी जम के करो. कोई और डाउट्स हैं तो मुझे पूछो. एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता दूं, those of you who are masters in economics and want to prepare Indian Economic Services exam July 2021, the course I am offering you in January will cover for Indian Economic Services July 2021. ये कवर करेगा उस पूरे कोर्स को. The course in January that we are starting will cover for Indian Economic Services 2021. I will be giving you 14 extra classes for preparing you on mathematical economics, econometrics, environmental economics and other topics that are not covered with UPSC. 75% course and orientation is same as UPSC. वो आपका इन classes के साथ cover हो जाएगा. Other than that, for other 25%, I will give you separate class, 14 odd classes, around 35 to 40 hours of teaching is what I will give you, covering for the mathematical part, econometrics part, past year paper discussion of economic services. We will do that I can assure you. So this part that I am offering you in January covers for Indian economic services also. So this is what we are trying to create, one-stop solution where I can give you the material, I can give you question answer practice, I can give you teaching, and I can give you economic services preparation also in the course that I am offering you right now. I hope the course is useful for the students and this video you find useful, so that you know when you prepare on your own also, please do not hesitate. I am there to help you. Even if you are distant and you are preparing on your own, अगर तुम दूर हो मुझसे, खुद तैयारी कर रहे हो, तो भी मत झिझको, सवाल पूछो मुझे. You know, we are there to help you prepare economics. I take the onus that whatever it needs, कुछ भी चाहिए हम economics तैयारी करेंगे साथ मिलकर.
And we will make economics optional a very doable and in economic services a very approachable thing. The purpose is not only that आप मुझे मेरे पास हो तो मैं हेल्प करूँ, हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप ज़रूर अपनी तैयारी पूरी करो और इकोनॉमिक्स से डरो बिल्कुल मत. There is no need to get worried about economics. Go for it, and I'm there to help you out with all my good intentions. I will bring out a similar video for GS preparation also, that how economy GS should be prepared very soon. I hope you like this video and you are helped by this video. If there is anything that I can do better for you, please let me know. Thanks a lot.